Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
बस दीदी बहुत चिल्ला लिया आपने। अब जो है गेम भी शुरू कर देते हैं हम। चैट कैसे हो सब लोग? नोटिफिकेशन आई कि नहीं आई? बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, बीच मजेदार में फंसा हुआ हूँ। आई है कि नहीं आई है? क्योंकि मैंने कर नहीं रखा था ऑन। सो ऑडियो प्रॉपर है कि नहीं ये बता दो, और बाकी सब ठीक है तो गेम शुरू करते हैं। कल हम लोग पहुंच गए थे, वैसे काफी सही पहुंच गए थे। ऑडियो सही है? अरे भैया चैट कुछ तो बोलो। Why chat is so silent? नाश्ता पानी लेने गए हो क्या सब? गाइस शुरू करें, आवाज आ रही है? कोई कंफर्म करा दो भाई को, आवाज आ रही है कि नहीं? देख देख के मस्ती कर रहे हो ना, छोड़ोगे नहीं भैया। मेरे को ही देखना पड़ेगा, कोई बोल ही नहीं रहा है। आ रही है यार, थैंक यू पंकज राव जी, आपका बहुत बहुत आभार। बता दिया आपने। चलो तो फिर शुरू करते हैं। कंटिन्यू हार्ड ड्राइव। ये तो कल भी देखा था मैंने। Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Episode 3, Ransom. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. loading वाला पंगा। Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. Indians. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. अभी स्ट्रीम सही है? अटक तो नहीं रही?
It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Okay. मैं इसको फॉलो करेगा, लेकिन पहले ज़रा देख लिया जाए कुछ है तो नहीं आसपास। 100% तो हम पक्का नहीं कर पाएंगे पहली बार में, लेकिन कॉफी थर्मस तो उठाएं। मेरे को पता था हमें कुछ तो मिल ही जाएगा। अंदर साउंड है किसी चीज का। ये सब तो बंद ही पड़े हैं। सब टूटा फूटा है इधर। टकला वॉरलॉक। टकलू टकलू मियाँ। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। लेट्स गो, इधर और देख लेते हैं। इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है। जंप करके जा सकते हैं? नहीं, जंप ही नहीं कर सकते इस एरिया में। वो बेचारे हम लंगड़े को वहीं खड़ा करके आ गए। और लंगड़े त्यागी कहाँ है तू? Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. हाँ चलते हैं, अब चलते हैं। एक कॉफी का मग वो लेके आए हम, थर्मस। अब वापिस चाचा की स्पीड में चलना पड़ेगा। यार तगड़ी तगड़ी। रोज का ट्रेलर है एक। ये है रोज का ट्रेलर, यहाँ रहती है रोज। ऐसे जा रहे थे चाचा तो जैसे रोज वहीं रहती हो कचरे के डब्बे में। Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. हाँ हाँ, हम तो भैया उसके साथ घोड़ा खेलेंगे। घोड़ी सॉरी। Welcome to oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. ये hypnotized है। Yes. Please come in. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. इसकी आवाज़ सुन के समझ नहीं आ रहा है। I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey Al? Al, what's... Oh...
Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Okay. Spooky. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. I can feel it, Mr. Psycho. मस्त रियल लाइफ में मस्त लगता है ये। 4 बुक ये रखी हैं। ये कुछ तो ये वो होगा ईस्टर एग पक्के में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल इसके बारे में Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. ओ भाई व्यास जी कैसे हो? Serve more money. कैसे हो आप व्यास जी? So आप आई गए हो तो भाई आप शुभ कार्य करके लाइक कर दो। 5वां लाइक आपके नाम। सब बढ़िया है भाई। तुम बताओ कैसे हो? क्या हालचाल है सभी लोगों के? My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Let's read. Mr. Randolph liked ये पहली बार Rose. देखने आया ना That little व्यास smile जी? she had. How she was still sweet when life had tried so व्यास hard to जी make अगर her शुरू bitter. से देखा होता तो It बहुत wasn't मजा any of आता। his हॉरर business गेम what है she did in her और trailer. स्टोरी But इंटेंसिव है those तो उसमें strangers, अलग ही मजा आ the रहा है। writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble, and they'd been in there for hours. way व्यास जी past 5वां her लाइक कर दो। bedtime. He reached for the phone हो and called जाएंगे the 5 sheriff's लाइक। station. एम अपना आज का भी 15 है, कल का पूरा नहीं हुआ था। बहुत क्लोज थे हम कल भी। आज पूरा कर दीजिए। आज 15 लाइक का एम है। मैंने पढ़ाई नहीं सी खुशी खुशी में बातचीत में। चलो शुरू करते। कॉल द पुलिस। अरे यार लाइक से ऐसा दिल को संतुष्टि मिलती है और कुछ नहीं। और लाइक कहाँ से होता है? अंगूठा बना होगा भाई, अंगूठा। हाँ क्या भाई व्यास जी मजाक करते हो? ऐसा हॉरर गेम में मजाक? ओ भाई 6 लाइक हो गए। कौन आया भाई? कौन आया? ओ भाई रेडियो कहाँ से आया? चलो भाई रेडियो सुनते हैं। नीचे से करना पड़ेगा क्या? चलो
I just stepped outside to catch a breath of fresh air, and let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, hi, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, गेम अरे भड़वा जी आप भी आ गए I just been staring out the window here, trying to make sense. अरे आप देखो अभी आगे देखो व्यास जी बोर नहीं हो गए आप इंटरेस्टिंग है ये You know, I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny. You know, Danny, and, then I got in trouble with the law. You know... क्या कभी-कभी स्टोरी इंटेंसिव गेम खेलने में मजा है? Well... I heard something like that, Walt. Yeah. Well, you know, he's, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today. And now I'm just alone here at the window, you know, waiting. Man. दोस्तों की ये कहानी चल रही है रेडियो I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same. PUBG खेलने के लिए यार स्क्वाड नहीं है ना पूरी इसलिए मैं तो खेलूं मेरा खुद भी मन है Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck. Good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I reach shore? तो भाई ये क्या चालू हो गया? ओके अरे बिल्कुल भाई PUBG क्यों नहीं हम सबके साथ खेलते हैं नूब तो हम खुद हैं हम कौन सा प्रो हैं एक्सप्लोर सब पहले ही कर लिया तो अब करने की जरूरत नहीं है यार मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac! Hello, action. Easy action. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! Take it easy! Get after it! Get away! Move it! Move it! Move it! I'll have you shot if you let him get away! ओके ये एपिसोड लगता है भूत कम और पुलिस वाले मिलने वाले हैं अब पुलिस वालों के साथ एक्सप्लोर तो क्या ही करेंगे अब पढ़ना ही पड़ेगा मिस्टर साइको है चॉपर आगे भागो Stop running! There he goes! Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. ये तो धर देंगे अपने को गलती से भी ना रुक गए Oh, damn. कवर लेते हुए चलते ओ भाई थैंक्स फॉर द लाइक जिसने करा यूर ऑसम आज का एम 15 लाइक है
भाई कमांड्स यूज करने हो अभी अभी पॉपअप हुए हैं। और भाई सभी लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है सबके? जो भी नए हैं स्ट्रीम पे वेलकम, और जो लोग पहले से हैं भाई क्या कर रहे हो, शेयर करो और बढ़ाते हैं लोग, सबको दिखाओ, सबको मजे दो। मैन्युस्क्रिप्ट मर्जी मेरे भाई, कैसा है? तू तो ऐसा ही इमोजी लगाता है, अटेंडेंस दे रहा हूँ प्रेसिडेंट सर। यार अभी मैं बचूंगा कैसे, मेरे पास फ्लैश लाइट भी नहीं। इधर एक्सप्लोर कर लें। और परजीवल भाई इंटरनेट का लोचा है क्या तेरे यहाँ भी? तो ये तो रास्ता अलग ही जा रहा है, यहाँ बाद में आते हैं, पहले उधर सकते हैं। उधर से मैन्युस्क्रिप्ट उठाते हैं पहले। क्या हुआ, सब लोग इतना शांत क्यों हो? जो भी है खतरनाक है। ओ भाई आज तो लाइक्स की भरमार है भाई, लाइक्स करना डन। आज तो एम ऐसा लग रहा है तुम बहुत जल्दी पूरा कर दोगे यार सब लोग। ग्रेट। लाइट पे जाके मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं। This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They पहले इसकी सुन लेते हैं, रुको। were after a writer, not a monster. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she अभी looked 11 लोग भाई wrong कैसे somehow. हो? The woman showed her That's okay. teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. सब लोग ये तो बता दो गेम कैसा लगा अभी तक? For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Can you hear me guys? कर सकते हो तो प्लीज रिप्लाई। नीचे भी जा सकते थे हम, दोनों रास्ते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ नहीं जा सकते। हाँ किसने बॉटल तोड़ी है अभी भी? गड्ढा। ब्रिज ऐसा कमजोर लग रहा है मुझे, बीच में ही ना गिर जाए। हाँ नहीं गिरेगा। लाइट बंद एंड हॉरर शुरू। अरे गाइस गेम कैसा लगा सब लोगों को, कुछ तो बोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोग, मेरे को ही चेक करना पड़ेगा। आवाज आ रही है भाई, तुम लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ये गलत है, चीटिंग करते हो। I've lost contact with Wilson when you were assigned to me. It's Wake's doing. Wait, are you seriously telling me that you writers took out my...
2 मिनट। He's the guy we're chasing. If it's हाँ not चेक him, करवाया तुमने मेरे से, फोन पे ऑडियो चालू कर। I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to साला come सब back मिल के and प्लान bite बना me के बैठे out. होगे, कुछ नहीं करना, रिप्लाई नहीं देना एचडी को। ये पेड़ किसी लिए तो दिया है, कुछ तो होगा इसका यूज, मैं भी बाद में। चॉपर वापस आ गया है। हाँ बहुत लैंडेड है। You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! दोनों तरफ से अटैक। भाई हेलीकॉप्टर गया, मेरे को लग ही रहा था गया। हेलो निशान, कैसा है? गुड एक्सप्लोजन इफेक्ट। आज तो भाई सब लोगों ने मिलके एम पूरा करने का ठान लिया है। हम ऑलमोस्ट 10 लाइक कर चुके हैं, 15 का एम है, ऑलमोस्ट पहुंच गए, वेरी क्लोज टू द एम। पहले ऊपर जाएंगे, क्या पता कॉफी का मग मिल जाए। भाई कॉफी के थर्मस। लोडिंग क्या लोडिंग? नहीं भाई लोडिंग फोडिंग कुछ नहीं, अभी मस्त चल रहा है। This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look. Rose तो hypnotized है। Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Okay. गैस स्टेशन। अब एकदम से भूत ना आ जाए। हाँ कॉफी। आइसोवन कॉफी, उसको लेने के लिए हमें जाना है। ओके सी फेंस पार कर सकते हैं। वही लोडिंग वोडिंग तो नहीं हो रही है, बता दो सही में पता लग रहा है क्या? नहीं इधर से नहीं जा सकते। I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. इन्हें भी अलग-अलग जगह घूमने का बड़ा शौक। Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. क्या लाइट भी मिल गई हमें?
जनरेटर ऑन करें क्योंकि ऑन होगा नहीं। क्या अनार क्यों चला रहे हैं? The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. मैकेनिक वाला काम करना है। हाँ ठीक। थैंक यू। वाह। जनरेटर सही करने की निंजा टेक्निक, लात मार दो। एपिसोड 3 है। लेट मी गेट समथिंग प्लीज। ये देखो पंकज भाई इतने डरते हैं ना, देखते ही नहीं स्ट्रीम, डरते ही रहते हैं हमेशा। क्या अब तक कितना डर है। मुझे नहीं लगता, शायद नहीं करा कुछ मिस। चलो मेरे को लग रहा था पीछे कुछ तो चमक रहा है। अभी फिर भाग जाएगा, डरता है, क्या पता। अभी तक तो भूत भी नहीं आया तरीके के। और मिल गई फ्लैशलाइट फाइनली। थोड़ी देर में गन भी मिल जाएगी। It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. अंधा करेंगे अब हम लोगों को, अंधा। Team 1, this is Sheriff Breaker. पहले सुनने दो जरा सा। एक्सेस कर सकते हैं क्या? Team 2, come in. I need a report. Over. Come on, guys. Talk to me. Come in, please. Over. नहीं, वो कभी कम इन नहीं कर सकते यार, गए वो तो। यार मैं देखो, पहली बात तो ये फालतू की चीज़ों में नहीं उलझना चाहता हूँ, क्योंकि है ना ओहो, फ्लैश बैंग सीधे मारता है। एक के लिए फ्लैश बैंग बच्चे
अभी भी आओगे क्या? And here's another call. You're on KBF-FM with Pat Maine. 17 के बाद भाई. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? अरे 10 व्यूअर आते हैं रे. There's a bunch of police cars there, Add lots of sirens, helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door. And समझ they're नहीं आया popping ऐसा off नहीं रे. guns there. क्या बोला तू? They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. कड़क करो क्या? ऐसा कुछ लिखना चाह रहा था. Pat, I'm telling you, it don't आज sound कड़क like no करो. party. ऐड कड़क करो. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. 10 लाइक मतलब 10 लोग तो आ गए. 15 लाइक का एम है अपना. आज तो एम भी पूरा हो जाएगा लगता है. मैन्युस्क्रिप्ट. अरे तुम साले. हमारा फ्लैश बैंग ऑटो करेक्ट. ओ भाई मैक पे देख रहा है क्या? अब अपन को ट्रिक समझ में आ गई है. अब अपन वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा. आराम से भगा ली. ज्यादा उठा रहे हैं. अबे हेल्थ तो पड़ी नहीं रही हमारी. रीजनरेट होती थी ना हेल्थ. पहले वो सीक्रेट लेके आते हैं यार. वो बहुत जरूरी है लगता है.
ओके, अब वो मैक यूज करने वाला है। हाँ, यहाँ पे अंदर घेर लेंगे। अबे नहीं करने देंगे। हो गई बिजली ऑन। Let's open this। प्लेयर भी मिल गए। यस, आई थिंक प्लेयर पहले यूज करेंगे। फ्लैश बैंक्स जब बंच हो जाएगा ना, तब यूज करेंगे। थोड़ा ये यार कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, दिखा रहा है। पहुंच ही गए, काहे को यूज करो, वेस्ट होते फालतू। I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. देखते हैं। Why, hello, Lorna. What do you have for us? कार तो ये रखी भैया की। लाइट किस चीज पर है? लाइट आउट। मतलब कोई भी आ जा सकता है, कोई बेल नहीं, कुछ नहीं, ये तो घुस जाओ। Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. हमारे मिस्टर साइको राइटर लग गए ना लोग। जस्ट अ स्मॉल छोटा सा पी ब्रेक लेके आते हैं।
यहाँ पे सिर्फ ए और डी लिखना, ऐड थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, मेरे को लगा कुछ ऐड करने को बोल रहे। And you are talking about advertisement. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Wait, I think you might be getting some disruption. Check कर दिया जाए, yes. मेरे को लगता है इसमें सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे, क्योंकि हमें तो पूरी करके देना ही है। और रीड करते हैं, हमने 2 छोड़ दिए। Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. "Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you?" Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. तो पता ही है हमको। मेरे को तो लगता है हमारा नाइटिंगेल भी कुछ तो पोजेस्ड है। थोड़ा सा ध्यान हटाया, काम लगता है। Let me sit properly. चलो। I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. भाई थोड़ा साउंड आया ना तो आई एम रियली सॉरी। मैं खा रहा हूँ, मेरे को टाइम पे खाना मुझे जरूरी है, भूख लग रही है। कोशिश करेंगे ना ही यूज़ करें, जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा। बाद में कुछ बड़ा आया तो उसके लिए सेव करते हैं। There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. सबको तो अंदर ही कर लो।
फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। साला कोई फायदा नहीं है लाइट चालू करने का, वेस्ट। There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they had left for someone like me to use. एक और लाइट जला देते हैं तो कोई आएगा ही नहीं। The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. भाई इस एपिसोड में प्लीज भालू दे दो। लास्ट में नहीं दिया था, इसमें दे दो भाई। ऐसे मेरा गेस्ट का अपमान ना करो। बंद हो जाती है क्या हुआ? चैट शांति हो गई बिल्कुल ही एकदम से। बंद हो जाते हैं। What happened chat? शांति क्यों इतनी? नीचे चलते हैं। आओ भाई आओ, वेटिंग फॉर यू। यहाँ तो उजाला दिख रहा है। लाइट में जाके पड़ेंगे। Sarah trusted her gut.
And her gut said Agent Nightingale was an asshole. क्या सनी है कि He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. शॉटगन कितने बुलेट हो गए हमारे पास? 14। इस बार बहुत एमो दिया है। कॉल पिकअप करते हैं। Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. एक और बार ये भी हिप्नोटाइज हुई होगी। शेकिंग इफेक्ट। किधर जाऊं? इधर को जाऊं या उधर को? लेफ्ट और राइट? हम फिर से खेलते हैं लेफ्ट और राइट। चैट प्लीज, लेफ्ट जाएं राइट जाएं? पाटिल साहब, अगर आप हो तो बताइए कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? और जो भी नया आया हो भाई, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना भाई। हेलो गाइस, बताएंगे? कोई बताने का कष्ट करेगा? यार चैट यार, इतना शांति मत करा कर। I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. ओके, तो ये चेक पॉइंट है, मतलब हम उल्टा ही जाएंगे फिर। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ मिल जाए। या सीक्रेट, इट इज अ सीक्रेट। वापस फुल हो जाएंगे। कोई बचा है? कहाँ से आया? क्या हुआ था समझ ही नहीं आया मुझे।
फॉल 2 मिनट गए, थोड़ा सा आया, थोड़ा सामान लेके आऊँ जरा खाने के लिए, भूखा पेट मेरा। तुम लोग रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, क्या पता क्या हो गया। 2 सेकंड आया। तो गाइस आ गए हैं हम सब लेके। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसा भैया, हम आए वैसे ही गिर गई थी अभी तक। The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. फ्लैशलाइट जलाऊं? Some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. मैन्युस्क्रिप्ट रीड करना है हमको, रुको करते हैं, इसके बाद ऊपर चढ़ जाए। On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Until now, जब खुद देख लिया आपने। The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path.
As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story, certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. चलो ये अच्छा हो गया, कुछ अपग्रेड मिला हमको फाइनली। अपग्रेड की बड़ी ज़रूरत थी हमें। अब एक मैन्युस्क्रिप्ट बची है, वो पढ़ लेते हैं। दो बची हैं। Wake attacked by possessed object. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, Guys, आज it का एम floated 15 in midair, तो हमें आज twitching. 15 लाइक का एम पूरा करना है। For a moment, I didn't बहुत understand close हैं, what I was looking आज at. शायद कर ही जाएंगे। The heavy Please, object lurched पूरा at me कर with दीजिए। impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. पहले एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को, देन हम आगे चलते हैं। शॉटगन की हमारे पास प्लेंटी ऑफ आमो हो गई है, वैसे यूज कर सकते हैं वो। अगर कुछ बड़ा आता है क्लोज रेंज तो डेफिनेटली यूज करेंगे। और बाकी आई थिंक ये भी फर्स्ट होते होंगे, तो इनको भी ट्राई करते हैं। नहीं कुछ तो साउंड आ रहा है भाई, कुछ तो पंगा है इधर। इतने ज़्यादा वो सीधे काम होता नहीं है गेम जब इतना सब कुछ देता है। ये डरा ओ भाई कहाँ से हम लोग परलोक सीधा हार गए थे, बच गए। तो गाइस अभी तक गेम कैसा लगा है सभी लोग? इंटरेस्ट किस किस को इंटरेस्ट जागा है इस गेम में? इन लाइट यू कैंट हर्ट देम। ग्राउलिंग साउंड है कुछ तो बड़ा ही कर सकता है होता है। बुलेट्स, लिथियम बैटरीज, एंटीवी जो हम देखेंगे। मेरे ख्याल से हमारा तीसरा एपिसोड तैयार है। Facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs.
week's episode of Family Occasion. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. सारे टीवी शोज कंप्लीट करे हमने. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlith, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide दूसरे लैंग्वेज में और सब इंग्लिश में डब हुआ ऐसा लग रहा है. Did I really? Of course, Mr. Derlith. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. What did you... Oh, Mr. Derlith, you have well pleased Nixie Burka, the dweller in flesh. Your body shall host 1,000 young, and all shall be glorious. इसलिए बोलते हैं थोड़ा शक्ति दिखाओ, शक्ति लौंडे बनो. Be calm. Alvin Derlith learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. Successfully third night episode पे खत्म हुआ Night Springs का. And manuscript भी मिल गया हमको. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. अगर मेरे पास इन्वेंटरी में इनफ चीजें हैं तो डर नहीं लगता है. Growling sound किसका? I think we are prepared for one more fight.
जस्टिफाइड बोला ना, जब रिसोर्सेज बचा के रखो तो उसका फायदा मिलता ही मिलता है। हमारे पास प्लेयर्स भी बहुत सारे हो गए, प्लेयर्स यूज करेंगे। तो किसी को बुलडोजर की फाइट अच्छी लगी? मुझे तो बड़ा अजीब लगा बुलडोजर। बैटरी भी फुल है। बहुत देर टिक जाती है बैटरी। अच्छी कितने गेट्स हमें खुले मिलते हैं। चला गया था क्या भाई? बुलडोजर की फाइट मिस कर दी हम। अभी भी बुलडोजर से फाइट करा है जस्ट अभी। खाना खाने गया था क्या? अरे एक्सप्लोर कर लेते रे, मेरे को लगा। I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Oh bhai, sunrise. Wow. The coal mine wasn't far now. अभी भी है लेकिन Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. आने नहीं वाले, उजाला है। चलो ऊपर करते हैं, फिर ड्राइव करेंगे। अब ऐसे में एक्सप्लोर करना बहुत इजी है। मस्त उजाले में घूमो, बर्ड चिरपिंग सुनो, एक्सप्लोर करो। एक और गाड़ी मिली हमें वहाँ, पहले हम सामने भी जाके आएंगे। रेडियो सुन लेते हैं भाई। This is Pat Main and you're listening to KBF FM, folks. अभी तुमने वो भी मिस कर दिया, टीवी का एपिसोड भी मिस करा। नाइट स्प्रिंग देखे थे ना बचे हुए, इस बार का नाइट स्प्रिंग में तो मस्त मजा है। I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass, not necessarily in that order either. Now folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. देखो, I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note,
I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. ये सुन के अच्छा लगा। सब के सब हमको कल्प्रिट नहीं समझ रहे हैं। हमारा रेडियो वाला बंदा भाई डाई हार्ड फैन है अपना। चलो हम कॉपीराइट लगवाएं अपने यहाँ, इससे पहले बढ़ लो यहाँ से। नीचे एक्सप्लोर करके आते हैं। मेरे ख्याल से नीचे से भी ऊपर ही आना है हमको फिर भी। और लकड़ी लकड़ी देख रहे हो आप? बाहर में जाए एलन वेक सुपरमैन लकड़ी ऐसे हिला देता है मजाक मस्ती में। इतना बड़ा लॉक उनने ऐसे ही हिला लिया। मायावी शक्ति है हमारे राइटर के पास। नीचे से भी ऊपर ही आना था। गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको ही यूज़ करेंगे। ये क्या हुआ? क्या हुआ है? इसके आगे क्या लेके नहीं जा सकते गाड़ी? ऐसा कुछ है क्या? फंस गई है। एक और गाड़ी थी वो लेके आते। ये भी नहीं गई मतलब नहीं लेके जा सकते हैं। ये तो चली गई। मेरे को लगता है किसी इनविजिबल हिटबॉक्स से टकरा गया, फंस गया। इसलिए उन्होंने सेकंड कार रख रखी है, तो पता होगा ऐसा हो सकता है। और ये कार तो मैंने वहां देखी थी अपनी बोट पे। मेरे ख्याल से चलो अब ये वाली कार यूज करेंगे आके। ऊपर से जरा अच्छा व्यू ले लेते। ओ एक घर, वो घर ही है तो पूरी वैली लग रही है। फैक्ट्री है। एक और रेडियो। Welcome back to KBF. मैं मिस करने वाला हूँ इसको। Enjoyed that too. सुन के बताना क्या Now, है। Doc, पानी लेके आ you रहा were हूँ। talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't
disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. And I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. सो गाइस आई एम बैक। क्या मिस करा इस बार के रेडियो में? क्या था? गाना तो है नहीं इस बार। अब बस अब कहीं नहीं जाने वाले, पानी वानी सब भर लाए। थोड़ा हिंट क्या बता ही दो, क्या क्या मिस करा है। सिर्फ कुछ अगर इम्पोर्टेंट हो तो बता दो, कुछ भी हमसे रिलेटेड रेडियो पे बात हुई हो। जस्ट इन केस। कंटिन्यू करते हैं हम। माउस पैड को साफ कर लेते हैं, माउस को भी। खाना लगा दिया है हर जगह में। वाह, शॉर्टकट ये वाली यूज करते हैं। गैस कुछ मिस करा क्या? रिप्लाई दे दो। क्या मिस कर दिया? लॉग फैक्ट्री है ये, वुडन टिम्बर। कहाँ इतना ऊपर कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हिट बॉक्सेस हैं यार, इसमें हिट बॉक्सेस बोल रहा हूँ मैं। ओ आखिरी है क्या? नहीं, इसमें भी बहुत है। For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. ना इधर कुछ नहीं है, शॉर्टकट लेते हैं। ये 8-7 कितना हो रहा है? कार से आगे यूज कर सकते हैं ना। नीचे की वैल्यू भी डिस्कवर करने का मन है मेरा। I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. म्यूजियम ही होगा। कुल्हाड़ी
Nice. Okay. Transcript read करते रहो. In the radio station, Sarah. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. हमारे RJ मेन हमारा बड़ा हेल्प कर रहे हैं. 1970, a volcanic eruption below Cauldron Lake, while relatively minor, caused most of the deep mining tunnels to collapse or flood. 32 miners lost their lives in the calamity, and all mining around Bright Falls came to a final stop. Now many of the remaining buildings are protected as historical landmarks. Okay. Museum entrance. हमें म्यूजियम देख के आते. चलो पहले. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. मेरे को ऊपर आना ही नहीं चाहिए. सीधे केव में जाते हैं. Wait! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. It was close. Maybe closer than ever before. भाई लॉक है. ये लॉक है तो मैं आया कहाँ से था? और कुछ सीन है इधर. कर्मा सेव होता है पक्के में. सब फुल है हमारा. ओहो स्टील मेरे भाई कैसा है? आज भी जल्दी. शिट, आज भी स्ट्रीम खत्म कर दिया जल्दी. अब डरावना हो रहा है. कुछ तो बड़ा होने वाला है भाई.
जल्दी नहीं, यही टाइमिंग रहता है। ओके, आज भी दिन में सो गया था। पहले मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, हट जाओ। बाद में When होने Thomas कचरा। Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. आते ही भाई She was young, कल जैसे आते ही vibrant, मर and गया फिर beautiful, से। full of life. He had never been कल a भी very ऐसे ही happy हुआ था। man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. गैंग वार हो गया, देख तू देख। I'll show them. मेरे होमीज नहीं है यार, GTA 5 से बुलाओ उनको। Where are my homies man? चलो। हाँ सही बोल रहा है। एमो तो इतना दिया है ना उन्होंने, तो आराम से मार ले। गैंग बैंग गैंग बैंग रात भर हुआ मर। भाई चीजें ही उठा के मारो, टकरा के भी मर सकते हो उससे। नहीं तो भाई फुल ऑन गैंग का बसेपुरी मचेगा। आओ वार ही दिखाते हैं। अरे यार ये मजाक नहीं। ओ भाई टकराने तेरी माँ, जगह ही तो देगा जब तो जा पाऊंगा। नहीं भाई आजा तू, आजा उड़ ले, आजा। मजाक सब उड़ के आजा, सब उड़ के आजा। अरे टॉर्च वो दमदार नहीं है भाई, ये यूज करने पड़ेंगे प्लेयर और फ्लैश बैंग्स। बहुत फ्लेयर इकट्ठे कर लिया अब यूज करके। बैंग बैंग हो जाएगा नहीं तो हमारा बैंग बैंग।
बाहर आ जा, नहीं रुक जा। मैंने जला के फेंका था। मैं सोच रहा था बच जाऊंगा तो, और एक प्लेयर का नुकसान। What the hell? टोर्नेडो। The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. बिजली के तार। भूत ने तो अरे वाह, बस इतने से लोग। अबे बच गए फिर भी। बंद करके आना पड़ेगा। ओ भाई फ्लेयर गन। ऑन कर सकते हैं। आओ भाई आओ, हमें इंतजार है। इसका इंतजार नहीं है। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। आपको तो शॉटगन से लेंगे। बच गए।
फ्री की बुलेट, फ्री की बैटरी, इक्वल्स टू फाइट। किसी और के फुटस्टेप भी आए मुझे। भाई इतने टैंक, और हैं अभी। ऊपर और हैं। ऊपर कैसे पहुंचना है? फोड़ो। कुछ स्विच है? ट्रस्ट तो मैं जो लिखा है इस पे भी नहीं कर रहा हूँ। ऊपर कोई तो है। पजल है क्या कोई तरीके का? नीचे ही आ गए। गेट इन। ऊपर गए। और अभी इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है। कुछ खिसका के लाना है क्या? अरे है तो लैडर। अरे बाबा, कभी कभी क्या अंधों वाली हरकतें करता हूँ। Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the Dark Presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. क्या है भाई? बंदी। वे ऊपर फुटस्टेप किसके हैं फिर? ऊपर कोई था ही नहीं। ऊपर कोई तो है भाई।
फिर फ्री का आइटम मिला, which means फ्री का आइटम equals to what लगने वाला? There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भी अग्री करता है मेरे से। दिया है तो कोई सेंस नहीं अंदर जाने में। मैन्यूस्क्रिप्ट, ओहो भाई कुछ तो पीछे म्यूजिक चालू हुआ है 8 बिट जैसा। Very unwake and bury in the cell. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Wow. No भाई कुछ नहीं। हमारा दिमाग में रख के डिजाइन करी गई ये चीज गेम के लिए। ये कौन सा एरिया है? स्टार्टिंग में आ गए
किधर चले हैं? ओके, इधर साइन दिख रहा है मेरे को। That means secret. That. Flash bangs बहुत काम आएंगे। Trust no one in the dark. भाई शॉटगन की एमो तो बहुत हो गई अब तो अपने पास। I had no real plan. अब यूज करेंगे। I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Pump action shotgun, yeah! 27 बुलेट भाई। आय हाय हाय। अब थोड़ा अपग्रेड्स मिलने लगे ना, अच्छा लगता है। लेफ्ट। Let me quickly check something. I don't care. भाई इनके बारे में करता हूँ। यार दोनों तरफ इतना बड़ा है। दोनों जगह का सीन समझ नहीं आ रहा है। इधर भी हैं चीजें, उधर भी हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इधर जाऊंगा उधर मिस ना कर दूं चीजें। The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach.
Was it going for Alice? मेरे को लगता है मेरे को होके आ जाना चाहिए लेफ्ट भी। आगे भी हैं, एक साथ सबको इकट्ठा कर लेंगे। इतना दूर आने का कुछ फायदा नहीं। ये कहाँ से आ गया? यहाँ का जंगल का भी क्या ही सीन है समझ नहीं आता, इतना लंबा आ गए। और ठीक तो गोल घूम के शायद वहीं आ गए हम। हाँ चलो, मतलब कुछ फायदा हुआ। फ्लेयर एमो मिल गई, 4 फ्लेयर एमो। कुछ स्केरी सा आता नहीं है। लास्ट टाइम में मैंने बहुत कंजर्व कर लिया तो इस बार एमो यूज करूंगा मैं। खुद ही खो गया हूँ। आए कहाँ से थे और जाना कहाँ है? हाँ तो उधर जाना। एक तो भैया जी इतना जल्दी थक जाते हैं। पंप एक्शन शॉटगन जितने नहीं देखी है मिल गई है।
चलो पहुंच गए। ओके ग्रेवयार्ड है क्या? मेरी बचपन में बड़ी फटती थी यार ग्रेवयार्ड, भगवान जाने क्यों। The graveyard shift may cause cancer. Okay, fast forward. भाई रुक जा, रुक जा। हाँ भाई, टाइम देख के आया है लौंडा। आ जा, आ जा, आ जा। अब एमो कंजर्व नहीं होगा, अब तो यूज होगा सीधे। इस पर डाउट जा रहा है। The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Ghost town. इसके अंदर जाने का रास्ता है नहीं। इधर डेड एंड है या घोस्ट टाउन? इधर डेड एंड है। चलो भाई घोस्ट टाउन में चलते हैं, घोस्ट टाउन की राइड करते हैं। एंट्रेंस हुई है हमारी घोस्ट टाउन में। स्वागतम, सुस्वागतम हुआ है हमारा। एंट्री गेट नहीं है इसका। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत देर बाद मिली है, चलो रीड करते हैं। Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. धोखा, फरेब, क्यों हुआ वो मेरे को नहीं पता। मेरे को फिर से मारना पड़ेगा उनको। नहीं, ये नहीं होने वाला है। ये फरेब हमारे साथ फिर से। क्या सीन है? घोस्ट टाउन इधर ही था, किधर? The place was dead, a ghost town.
Had been for decades, maybe a century. हाँ भाई, सारे कमांड चल रहे हैं श्रीधर जी, मत टेंशन लो। टेस्ट करते रहा करो, लेकिन ज्यादा लोग टेस्ट करते नहीं है। भाई इधर गड्ढा है। ओ भाई नगर पालिका को बुलाओ, कोई गड्ढा भरवाओ। नहीं, नूबड़ नहीं है, नूबड़ जैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये भी नहीं काम करेगा पाटिल साहब। बनाता हूँ मैं, इनको बनाता हूँ। कोस्ट टाउन है ये, कोस्ट टाउन। फेस कैम लगाता हूँ भाई, जल्दी ही लगाता हूँ मैं। जितना हो सकता है उतने जल्दी लगाऊंगा। अभी तो भाई 250 सब होने वाले हैं। 250 पे मैं रिचार्ज का गिव अवे करूंगा। जिस पे इंटरनेट नहीं है प्लीज आए। जियो का रिचार्ज का गिव अवे, जो भी सिम हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, सबको रिचार्ज मिलेगा। सारी चीजें एक ही बार में हमारी तरफ आएंगी। कमर तोड़ दी भाई, आए हाय। फाड़ दे पूरा ट्रैक्टर फेंक दिया मेरे ऊपर। आजा भाई आजा, डब्बे फेंको हमारे ऊपर। हाँ तुम भी उठो, आजा। तुम्हारा ही इंतजार था भाई। एक और उठ गया। सब गए क्या? ये भूत हैं कि मजाक है? हैं? ट्रैक्टर ही फेंक रहे हैं उठा के। पता लग रहा अभी ट्रेन के डब्बे उड़ रहे हैं, हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। शक्तिमान है ना मैं, सबसे बचा लेगा। हाँ भाई सब उड़, चिड़िया उड़ खेल रहे हैं ना सब। बड़ा उड़।
गा रहे हैं भाई कुछ भी। सेफ हेवन हेवन। I needed a key for the door. देता हूँ, अब की ढूंढते हैं। मिल गई। ग्राउलिंग नॉइज आ ही रही है भाई, कुछ तो बड़ा आएगा अब। मैं बोल रहा हूँ जल्दी। स्टोरी कट सीन नहीं, कट सीन आएगा। प्लेयर का नाम यूज नहीं करी जो हमने अभी तक। Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. शॉटगन फेंकनी पड़ेगी। ये फेंकते हैं ना। क्या लूं, राइफल या शॉटगन? मेरे पास शॉटगन की बहुत एमो है और राइफल की लेट्स चेक 11। लेकिन राइफल दूर भी मारती है और राइफल पावरफुल है तो राइफल रखते हैं। ठीक है ना एक साहब, जैसा आप बोलते हो वैसा ही करेंगे। राइफल रखते हैं, दी है तो किसी काम के लिए दी होगी। टोर्नेडो से तो लड़ाई करनी नहीं होगी, हम उससे लड़ाई करेंगे अभी क्या। देखते हैं भाई, गिर ना जाए कहीं। Text. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. ग्रामर सिखा क्या ना राइटर साहब, अभी भी ग्रामर की पढ़ी है। गांड फट गई है पूरी, लेकिन ग्रामर सिखाएंगे। भाई अब यूज कर लूंगा मैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता एपिसोड खत्म हो और मेरे पास एमो फालतू बच गया हो, क्योंकि हम नेक्स्ट एपिसोड में शायद यूज करते ही नहीं हैं ये वाले एमो। So let's go full on tishum now. Birds. जाने को कुछ
तो और है नहीं। एमो है, कुछ तो चमक रहा था भाई। अब थोड़ा हॉरर वाला सीन अब लग रहा है। अंधेरा। लेट्स सी क्या आज हम डरते हैं। अभी तक तो कुछ डराने वाला मिला नहीं। टनल गो टू कॉलर लेक। टनल्स गो टू कॉलर लेक होता है। बाद में सुनूंगा दीदी, पहले एक्सप्लोर कर लेने दो। कुछ है तो नहीं है। तो आप देख के आ जाते हैं। अब दीदी क्या बोल रही थी? हाँ क्या बोल रही थी आप? एलन एलन आया आया आ रहा हूँ। यार पहले ऊपर हो क्या हूँ या पहले नीचे जाऊँ? मैन्यूस्क्रिप्ट। हाँ मैं वही पूछने वाला था, ऊपर जाऊं कि नहीं जाऊं, वही पूछ रहा था हमें। इसलिए मेरे को लग रहा है कि ऊपर पहले जाना चाहिए। अबे नहीं रे, शिट। अब हम वापस नहीं जा सकते क्या यार? कि जा सकते हैं। हाँ रुक जा, पहले पढ़ने दे फिर Even हिला। behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. आई होप हम कुछ मिस नहीं करके आए हों यार वहाँ पे, और आई होप ये वहीं जुड़ जाए। I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. करेगी, क्यों ना करेगी।
पहले इधर जाने से जरा उधर देख के आते हैं। यहाँ का क्या सीन है? नहीं भाई, गलत आ गए। नहीं, और कहीं जाने का है ही नहीं। इस टाइम तक साले मच्छर आ जाते हैं, बड़ा माँ। नीचे ही लाना पड़ेगा, पहले उधर जाना पड़ेगा। भाई इधर आने का फायदा क्या है? नीचे जा सकते हैं। I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. पोटैटो लाइफ क्या करें भैया। मेरी फट गई थी भाई। मेरे को लगा मैं गया नीचे कहीं।
अरे 15 हो गए। ओ भाई एम पूरा हो गया हमारा। ये एम पूरा हो गया। इंडिया फेवरेट नहीं बोल सकते अभी आप हमें, बट नहीं, ये लैडर मैंने डाली क्यों है मुझे ये बता दो बस 2 मिनट। ओके वेट वेट वेट। तो गाइस हमारा ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मशीन वाला पजल सॉल्व। लाइट चली गई है और सब अंधेरा अंधेरा हो गया। लात मारेंगे हम इसमें। राइटर साहब का एक्शन। ऊपर के नीचे ऊपर के नीचे ऊपर के नीचे कहाँ चले? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। Where should we go? इसलिए तो खेलता हूँ रात को, डर तो लगे। डर ही नहीं लगेगा। ऊपर चलते हैं। ऊपर प्लेयर्स मिल गए हैं और ऊपर ही लुकआउट है। कट नहीं बस यही कर सकते थे हम ऊपर आके शायद। That's all we can do it. लग गई। सीढ़ियाँ लेने की जरूरत क्यों? अभी शॉर्टकट दिए हुए हैं तो। Oh shit. I think इसलिए जरूरत है। वापस जाना पड़ेगा, मर ही जाएंगे नहीं तो पक्का पता है। पहले मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." नहीं F1 करना पड़ता है कि के लिए क्या रे। नहीं Oh, great. Another cable car. Just great. पहले वाली थी।
गाड़ी टूटनी नहीं चाहिए। गलती से फ्लेयर गन चल जाती है अभी। मैंने बोला ही था भाई ये भी हो सकता है। पूरा ट्रेन का डब्बा गिरा है। लीप ऑफ फेथ पढ़वा रहा है। आने दे अभी, रुक जा। असैसिन्स क्रीड आने दे, मारता हूँ उसमें। राइटर साहब से लीप ऑफ फेथ मरवाओगे 2-3 हड्डी टूट जाएंगी उनकी। यहाँ आना था हमें, लेकिन आ नहीं पाए। Okay. We are about to have a fight. कंजर्व कर लिया हमने। हम तो सीधे धनाधन होने वाली। भर भर के मिल रही। कॉलरन लेक चेक पॉइंट रीच्ड। प्लेयर मिल गए हैं, प्लेयर पे शिफ्ट हो जाते हैं जल्दी से। प्लेयर जब भी कुछ उड़ता आता है ना, बड़ा काम आता है। टूटेगा।
देख तो इनकी माइंड पर जाएंगे सीक्रेट, समवेयर सीक्रेट। फ्लेयर गन है एमो, ये भाई तेरे को पता है इसमें फ्लेयर गन ज़्यादा पावरफुल है, सबसे पावरफुल शायद फ्लेयर गन है अभी हमारे हाथ में, इससे पावरफुल वेपन कुछ नहीं है अभी। इसको यूज़ करने का बड़ा मन हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है जिस पे यूज़ करने का मन हो। मैन्युस्क्रिप्ट इस बार बहुत Maud had इकट्ठे checked कर। all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. यार कुछ बड़ा आया, मैं उसके लिए बचा रहा हूँ, इन केस कुछ बड़ा आया तो। और पिछले बार कुछ आया ही नहीं था, मेरे को लगा भालू मिलेगा, भालू से फाइट होगी, भालू आया ही नहीं। क्या भाई सीन क्या है पर? हाय लात मारता ना, हम मारे। मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार कुछ तो बड़ा फाइट मिलेगा कि भालू भाई, जरूरी थोड़ी नहीं है कि यहीं भालू आएगा। अरे यूबीसॉफ्ट अब नहीं, अपने जा रहे हैं यूबीसॉफ्ट सब लॉकडाउन के बाद देखा जाएगा अब यूबीसॉफ्ट का। क्या सीक्रेट डोर है क्या कुछ काइंड ऑफ? लग तो यही रहा है मुझे। ये तो खुला नहीं है। अरे यूबीसॉफ्ट की ऐसी की तैसी, पहले ये रेमेडी गेम्स का ये सॉल्व करो, कहाँ जाना है? वो दरवाजा खुला नहीं है, इधर हम जा नहीं सकते, ये बंद है। और बेसमेंट में, हाँ ये भी है। Tom, I miss you, Tom. CW and DZ. Tom, ये हमारा राइटर साहब है ये तो। शॉटगन एमो का क्या अचार डालूंगा? सारे फ्लेयर यूज कर मारूंगा इस बार। करना ही पड़ेंगे।
Easy. क्या लेगा भाई, तू आगे से क्या उखाड़ लेगा? नहीं क्या करेगा? गू खाता हूँ भाई, गू खाने से बहुत प्रोनेस आती है। I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. Okay, so Alice हमें दिखने वाली. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. अरे सर इतनी इंग्लिश हमें आती तो हम भी कर ही लेते, फिर कम उसको नहीं, बस वर्ड ही नहीं आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर लेते. Wait, are you? Wait. Hey, I'm here. I'm coming. No, get away. Sorry, please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make him play ball. You see? To get him writing for us. Please. Please. Oh.
I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Alan. अब यही पॉइंट है जहाँ पे हम हमारी एंड स्क्रीन पे जाएंगे और गेम को क्विट करेंगे क्योंकि फिर हमें नहीं तो फिर से क्या हो स्टोरी थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसको क्विट करता हूँ, थोड़े से गाने लगाता हूँ और स्ट्रीम को एंड करता हूँ। What should we play today? Let's play some NCS भाई। NCS ही सुन जा, थोड़ा मस्त शांति रखो। कल टाइम पे आइयो, लेके गिव अवे शायद कल ही शुरू हो जाए। रुक जा, मैं स्लो बीट लगाता हूँ कुछ तो। आज तो भाई लाइक का एम हमारा 15 था और ऑलमोस्ट 20 लाइक हो गए। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट करते रहो। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Thanks for watching the stream guys। जो लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं प्लीज सुन के जाएं। And I hope कल सब टाइम पे आए, कल हम 4th एपिसोड खेलेंगे। एंड तो मेरी तरफ से बाय है। Enjoy the music and good night। Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah,
I just wanted an explanation. When I close my eyes before going into Universum, I think about a moment we were hoping wouldn't end, because I never knew it was my imagination. I never wanted to say what I said, I just wanted an explanation. Never wanted. So let me catch you. So let me catch you slipping by. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Oh, why? Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights?
You're like, hold on. Walk through my heart. Show me your eyes. 'Cause all along I knew I was doing the wrong thing by giving you my time. Where was I? Where was I when I needed it most? When I needed myself? Where was I? Where was It's YouTube Music. Download the app today and get the first 30 days free.
I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go?
Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Up here, we're free, bound only by frozen memories, lost in time, racing all these broken dreams tonight, and we'll fly. Yeah.